This conference will now be recorded. Hello and welcome to Outlook Chapter 8. Uh, Today we're going to discuss Nifty and a few stocks. Price action अगर देखें तो price action के हिसाब से S&P 500 made a good move. SGX Nifty में भी एक अच्छी move आई and we were anticipating that, as I've been saying, that we are now in a kind of an uptrend. Maybe in a bear market we'll see that अभी उसका bear market की एंड जो हम बेयर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं ये अभी सिग्नल नहीं आए, पर बेयर मार्केट में भी रैलीज फेरोशियस होती हैं, बट कई अच्छे साइंस हैं जैसे कैपिटल गुड सेक्टर इज मेकिंग न्यू हाइज, एबीबी सीमेंस, stocks such as Bajaj in the auto sector. Bajaj is nearing, which I've covered today. Maruti, Hero, Honda, this Nestle type stocks are doing well. ITC, Hindustan Lever, Britannia, and then pharma looking, as I said, Dr. Reddy's, Alchem Laboratories, and a few other stocks. They are doing really well. So the only laggards here are, I think, IT. IT में थोड़ी सी pacing अभी चल रही है, पर IT is also seems like the end is near for the down move, but अभी उसका एक अभी reversal confirmation नहीं आई, but let's see in that. Metals are underperforming, maybe basing के अंदर वो भी enter कर चुके हैं. Then let's see Tata Steel and other stocks. Not covered the metal sector today, but we'll add on to those. So we'll cover that. आज मैंने S&P 500 या दूसरी indices को नहीं लिया. It's just India centric, so we'll cover Nifty and a few stocks. This is not a very long video. Again, 20-25 minutes. Hopefully, I'll try to cover it in that time. And back to that, if you like this channel, subscribe to it. If you like the video को like करें, share it with your friends, whosoever is in the market, if that helps, if this helps you. So, I mean, and if you want me to add anything, just comment it and I'll try to add in the next video. So without wasting much time, we'll start with today's session, the Outlook chapter 8. So the first up is Nifty. ये chart मैंने काफी देर से I've posted it. So I'll start from the lower end. अगर lower end पे देखें 1.5 फिबो पे उसने support लिया, Nifty ने दो dodgy candles के बाद up move continue हुई, bottom of this gap, वहां से एक flag formation में उसने consolidate किया. Next was the support of 480, sorry, where it took the support and made a reversal bar and good up move since then. So what has happened after that is quite interesting. One, इसने gap fill किया. Second, it stopped at one fibbo, but the most important part is it broke this trend line. So पिछली बार भी इस trend line पे यहाँ पे resistance आई थी जहाँ से new low लगा. इस बार after a long time it has broken this trend line, went to one, उसके बाद consolidate हुआ for 4 days. Fifth day इसने reversal लिया. In technical analysis we say resistance has become support. So इसने जो पहले resistance थी यहाँ पे, इससे पहले भी not mentioned in the chart, तो अब यहाँ पे आके इसने support लिया. बड़ी बार ये continuation future है जिसमें SGX का data भी शामिल है. So if you see that 16,200 is the resistance here. Once it crosses this target, we are expecting 16,400 to 500 range. तो अगर आप सिस्टम देखें तो फ्रॉम हियर 1.5 फिबो से जब इसने अप मूव लिया तो ये हायर हाइज बना रही है, यहाँ से हायर हाई हायर लो. तो अगर ये कंटिन्यूएशन रहती है तो अब नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये अगली ट्रेंड लाइन, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले सकती है. that we'll see tomorrow in the next 2 days. So interesting things happening. If this has to continue, तो ये वाला हाई तोड़ के ये नया हाई मारने की कोशिश करेंगे, which is evident in a lot of stocks as well. So Nifty overall bullish structure, as I've been saying for a while, it's in a buy on dip kind, and it is showing कि ये buy on dip पे है, ये dip आपने buy की, ये dip buy की, ये dip buy की. तो अब next we'll see अगर यहाँ पे चैनल के अपसाइड जाके यहाँ पे अगली टिप आती है तो विल सी, आई डोंट नो अबाउट दैट. वहां पे देखेंगे यहाँ ये इसको तोड़ के 17,000 की तरफ चले जाती है. अगेन वी डोंट नो येट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स. या लेट्स टेक द नेक्स्ट 2 or 3 days वहां कहाँ जाती है, उसके बाद शायद यहाँ पे ये एक रिवर्सल यहाँ तक चैनल में आए और कंटिन्यू करे चैनल के अंदर.
या चैनल को तोड़े, we'll see. But for tomorrow and couple of days, I have an eye on one Fibo and 16,500 kind of a level. Next one is Larsen and Toubro. LNT, great stock, made its high at 2080 level, then started falling, made newer lows, and then the dynamic structure for anyone who knows Rafael, the dynamic structure can see here the reversal pattern. 1.272 पे उसने support लिया, symmetry है 0.5 पे resistance दो बार, 1.270 को 272 पे support. Now what has happened? ये वेज से बाहर निकल गई, पहले इसने यहाँ पे मेड अ मूव, टेस्टेड द वेज एग्जैक्टली, एक दो दिन रिवर्सल बार्स बनाई, बट थर्ड डे जस्ट क्लियर आउट दिस रेजिस्टेंस, क्लियर किया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक अब क्या दिखा रही है, इट्स मेकिंग काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न, दो बड़े मूव्स के बाद कंसोलिडेट हो रही है फ्लैग पैटर्न के अंदर। ये एक रेड जो लाइन है, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट लेवल, इसको इसने ब्रेक किया। फ्राइडे को हमने आउटलुक प्रीमियम में इसी चार्ट के बेस के ऊपर कॉल्स को लॉन्ग किया, एंड राइट नाउ दे आर मूविंग। अगर आप कम एग्रेसिव हैं तो इसको हाई को इसको क्रॉस करने दें, उसको मूव करके वन का टारगेट 1785 1790 रेंज, फ्लैग का ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, 1785-90 रेंज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरी पोजीशन इसमें लॉन्ग है। नेक्स्ट अप मारुति अगेन आउटलुक प्रीमियम पे हमने ये ट्रेड लिया था, यहाँ पे 8400 865 आई थिंक। रीजन क्या था? अगेन दिस लुकिंग फ्लैग, अपवर्ड ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और रिवर्सल बार है, यहाँ हमने ट्रेड लिया, और फ्राइडे को हमने 8765 पे मैंने एग्जिट किया। रीजन उसका ये है कि अगेन इसने ये टारगेट जो इसका अपवर्ड रेजिस्टेंस है इसको टच किया है, although कोई सेल सिग्नल नहीं है presently, so if anyone is long can hold, keep a trailing stop loss. Very strong stock. Oscillator, um, oscillator currently overbought है, but ये overbought बहुत देर से है, so I mean it's not a signal, so that's why I always say कि overbought oscillator doesn't mean sell. So it has been rising from here, continued rising, and has been overbought for a while now. So Maruti, again, if it crosses this area, goes to 9100, I won't be surprised to see that it can go. If any retracement happens, I'll take a long here. But for the timing, I'm out of it. But the stock is really strong. A sector is overall is very strong. Next stop, ICICI Bank. ICICI Bank की although I gave in one of the I gave a target of 610, achieve नहीं हुआ। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, I got out around this level. It made a double bottom here, और उसके बाद अब ये again 1 2 ये चैनल में ट्रेड कर रहा है काफी देर से। अब चैनल के बाहर ये आप देखें, it tried to 0.786 786 range. It tried to break out of this channel and did, with good volumes, gap and good volumes, and since then 3 good days. उसके बाद सेम लार्सन एंड टूब्रो की तरह इसने भी एक बहुत अच्छी मूव दी है। उसके बाद एलियट वेव एंथुसियास्ट के लिए ये 3 है, ये 4 हो सकती है मार्केट तो अब यहाँ से ब्रेक करके टारगेट इसका 821 है, ब्रेक करने दीजिए इसको। एक कल हो, अगर अच्छा दिन हो तो मे बी इट विल ब्रेक इट एंड देन कैन गो लॉन्ग विद फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इट्स योर चॉइस, और विद स्टॉक अगेन स्टॉप लॉस इस बार के नीचे रख सकते हैं। तो दैट्स, अगर ये कंटिन्यू करता है इसी रेंज में और फ्लैग थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो ये सपोर्ट होगा। अब ये चैनल जो एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट, एंड इट इज बोथ ओपन, but if it breaks out, can keep a stop loss. It continues falling, this is the area where I'll go long. If it breaks the flag, I'll go long as well. So ICICI Bank, as few other stocks, looking very strong and a long play. Till now there is no short play. I don't think there's a short play in this whole session, because there are not very a lot of short opportunities अभी दिख नहीं रही मार्केट के अंदर। अल्ट्राटेक मैंने शॉर्ट किया था, I had to exit at par because I tried to short it twice. Both times I exited nearly at par, one at a very small loss. So there are not a lot of shorting opportunities presently. So
more, that is how the market is. So overall आप देख सकते हैं market sentiment भी उसी तरह का है कि opportunity short की है या नहीं, अभी नजर नहीं आ रही, आगे जाके आएंगे, we'll see. बजाज फिनसर्व वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, ये चार्ट मैंने पहले भी शो किया था. WXYXZ की कंप्लीशन, फिबोनाची का एरिया, यहाँ से वेज है ABCDE, इसकी कंप्लीशन से स्टॉक बाहर निकला, अभी कंसोलिडेट कर रहा है. डायनामिक स्ट्रक्चर्स अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, एनी स्टूडेंट ऑफ द राफेल अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये दिख जाएगा कि इट्स रेडी टू मूव अप वंस इट ब्रेक्स दिस. I have high targets for this around 12,500 at least and 13,000 to minimum at least. अब वो एक resistance हो सकता है, यहाँ पे इसने एक बार resistance लिया तो ये trend line को मैं closely watch करूँगा around अब 13,000 depends when it happens. 13,000 30,200 range के अंदर एक बार profit booking करेंगे वहाँ पे, but overall the bottom seems like is in till the time अगर ये area break नहीं करता तो ब्रेक कर लेता तो एक बार फिर यहाँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है बट एनीथिंग कैन हैपन. अगर ये ब्रेक कर लेता है तो अगेन इस 10,800 900 एरिया के नीचे जाता अभी नजर नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की, अभी ब्रेकआउट नहीं किया बट लुक्स लाइक इट्स रेडी फॉर अ ब्रेकआउट. अगर ब्रेकआउट करता है तो 12,500 फर्स्ट एंड 13,000 next. Both Bajaj Finance and Bajaj Finserv are looking good, very strong, ready for an up move. Both haven't broken out, but any day, tomorrow, day after, both can break out. So I talked about the Rafael program previously as well. A lot of people had a lot of queries. So again, I'll repeat it. It's a 4 to 5 session program. I'll cover 4 key concepts and 2 minor concepts, which are not minor actually. 2 sessions will be on price, understanding price and how you can use price in your advantage to take trades. Just watching price only, as I talk about different concepts, just like dynamic thrust, just like a new concept that I'll tell you in the next couple of slides as well. And then advanced Fibonacci and basic and advanced Fibonacci. We'll talk about market geometry. So these are the 4 sessions, and then in between we'll talk about position sizing and risk management and queries on mindset and bias diffusion. So 4 sessions of knowledge and 1 session of review session of whatever your questions and answers will be. All the videos will be with you for life. You can watch it at your leisure. So that's the Rafael program. The batch starts in August. So anyone who wants to ask me any question can DM me. That's about the Rafael. So next stock is LTTS. इसके स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, as I said, IT is underperforming, IT is underperforming, metals are underperforming, but IT is in a basing formation. So एक राफेल का एक कॉन्सेप्ट है फ्लूइड ऑप्टिक्स का. तो फ्लूइड ऑप्टिक्स के अंदर जैसे दिस इज ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन. ओवरऑल अगर आप ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखें तो the target is this area, but it is actually this area which is, but how did I arrive to that? That's the concept of fluid dynamics. I'll not go into detail about fluid dynamics. So coming back to LTTS, LTTS, I think the numbers were good. I didn't go in deep into it. Stock has been consolidating. Looks like it is on the verge of a breakdown. Let's see how breakout. Sorry. Let's see how market responds to the number. If market's okay with the number, this holds this level in the next few days or a few weeks or a couple of months, expect 4,000 odd. This is 3,825 is the target, which is the target from fluid dynamics. Overall, otherwise 3,400. But let's see, we'll watch this chart more closely in the next few sessions. Let's see how it does. अभी breakout नहीं हुआ है, यहाँ पे भी इसने try किया, breakout नहीं हुआ है. Once this breakout happens, then it can go pretty higher. This is based on, the fluid optics is based on Newton's law and based on physics. So that's what it's all about. Once you start looking at it that way, you will see a lot of these hidden patterns in the structure. Next up, Bajaj Auto, again fluid dynamics, fluid optics, sorry, is visible here.
but the stock was in a channel, broke out of the channel. Now these 3 4 freak bars, but what's good about it, it has broken above the real ranges here. Looks like a triangle in the making. If it breaks out of here, we are going, the pattern target is 4500, 4500. अभी breakout नहीं हुआ है. We have long positions in the outlook premium in Bajaj Auto that we took on Friday. In the anticipation, we have hedged it with puts. So let's see how it works out. But overall, the stock looks promising, just like other sectors. मारुति में आपने देखा, मारुति में already run up काफी ज्यादा हो चुका है पैटर्न के बाद. Not like it has also run up from 3600 to it has gone to 3900. और पैटर्न के बाद run up हो चुका है. But बजाज ऑटो में अभी पैटर्न का run up, it's still inside the pattern, so there's opportunity here. It can fail as well and come back here. That's why we have put options. But a lot of things are saying that it can rise. But confirmation I give will add more lots, will pyramid it. But otherwise, right now, that's how it is looking. So that is it from me for today. I've covered a few stock. As I said, it's going to be a very small video of 10, 15, 20 minutes. Any comments you can put, any questions you can ask, and the Telegram free channel is the Outlook, and that's my Twitter handle. So anything or you wish to ask or comment, or you want me to add something, be it commodities, equities, volatility, or anything else, you can comment and I'll try to add it in the next chapter of the Outlook. So have a nice evening ahead, and have a wonderful trading week, and I'll see you again next week at the next chapter of the Outlook. Thank you. Have a good night.